Hi friends, how are you all? Today we are going to discuss a new topic, that is the 25 key differences between MRTP Act 1969 and the Competition Act 2002. The topic is very important for LLB student, LLM student and the student who is dealing with the Competition Act. In this lecture I have tried to provide 25 or more than that, the key differences between MRTP Act 1969 and the present Act. In addition to this, I have already, uploaded three lectures. One is relating to the introductory part, in very brief, to the Competition Act. Second one is that is the answer writing skills, how you can improve your answer writing. And the next one is that is very important topic recently uploaded for you, that is the Competition Amendment Bill 2022. A snapshot of the Competition Amendment Bill 2022. In that lecture, I have covered all the major, the changes introduced by the government for the existing law. So let's start the topic without wasting time. First of all, we should understand, we must know the basics which we have already gone through. So if you talk about the MRTP, the left side is relating to MRTP Act and this one is relating to the competition. So the first difference is that is the concept of competition not properly explained. In MRTP law, the concept of competition is not properly explained, but if you read the Competition Act 2002, obviously we do not have any exact definition on the word competition. But when you read the cases, interpretation comes that competition should be very healthy, and you can also correlate this word with the preamble, which talks about that we have to you can say we have to um, prevent such practices which are having appreciable adverse effect on competition. We have to promote and sustain competition, and the consumer protection should be there, and freedom of trade. And we have to establish the commission, that is CCI. So these are the key, you can say, the features of the preamble you can correlate with this. In addition to this word competition, you know very well that is it is a business rivalry. It is a business rivalry, not a personal rivalry. Second one, that is it is based on, in MRTP, the competition, or you can say that is the business rivalry is based on size theory. The MRTP Act is based on the size theory, size of the firm, size of the company. Okay, so the interpretation taken in MRTP is quite different as compared to the competition. Now, in Competition Act 2002, behavior theory, or you can say the behavior approach, is preferred, that the behavior of the company. If the, let's suppose, the company is holding 25% or more than 25% or maybe 50% share of the market, it is not per se that it is bad. First of all, you have to you have to prove that it is abusing its dominant position. But in MRTP, the scenario was different. Right now in Competition Act 2002, we should follow the interpretation, or you can say the jurisprudence of Article 39 BC, which talks about that the concentration of economic power per se not good or bad. But if that concentration of economic power creates some a detrimental impact on the consumer, or you can say the market or the public interest, then it will be prohibited or restricted by the state. So the merely holding the dominant position is not, or merely holding the size is not any criteria. You have to prove that it is creating some appreciable adverse effect on competition in India. Point number 3 talks about the consumer.
when you read MRTP law, we did not find any proper you can say the definition of the consumer. Generally we refer the consumer protection act at that time 1986, but right now we have a very exhaustive definition of consumer, that is 21F 21F. And now this you can also correlate with the you can see the recent you can say that is consumer protection act 2019, जो हमने वहां पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंज्यूमर है उसको भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का डेफिनेशन है यहाँ पर दैट इज वेरी वेरी ब्रॉड एज कंपेयर टू in MRTP, when we generally refer section 21R of the Consumer Protection Act 1986. So this is again a very very good you can say the difference because the third pillar of the preamble of Competition Act 2002 also talks about the consumer protection. Next point is that is when we look into the definition of person, तो MRTP law में person का definition नहीं है, ठीक है ना। तो it is very difficult to identify that whether the particular firm or you can say who is amount to person under this law. But now this problem is also solved by the Competition Act 2002 that person का जो definition that is properly you can say provided in the law. But still there are some limitations of the law. That's why recently the Competition Amendment Bill 2022 introduced a number of changes which I have already covered in the previous lecture. So वहां पर जो आपका जो person की जो definition है उस पर एक you can say we can take a critical thought that if you talk about the cryptocurrency, if you talk about the cryptocurrency or you can say the person who is investing through cryptocurrency, whether that person would be amount to the consumer first when we refer the definition of consumer, और person का जब definition हम cover करते हैं तो वहां पर जो हमारा जो सिनेरियो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर पर्सन के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिक्स एक्सपेंशन, जो अभी रिसेंटली जो टॉपिक्स चले हुए हैं रिसेंटली जो recently summit of BRICS talks about the BRICS expansion, we also need to focus that whether this expansion or the state is also covered within the definition of person when we talk about at international level. So there are some point on which we can think very critically. Next point is that the definition of goods includes shares or you can say the stocks before and after allotment. But when we talk about the Competition Act 2002, the goods include shares and stock after allotment. Next point is that is if you talk about section 36A deals with the UTP, unfair trade practices, and section 33 contains 14 RTP, restrictive trade practices. Competition Act 2002 इसने यहाँ पर क्या किया है, सेक्शन 3 क्लॉज 3 के अंदर 4 आरटीपी कवर किया है, सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंदर 5 आरटीपी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कवर किए हैं, और सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने 5 आरटीपीज कवर किए। सो ब्रॉडली यू कैन से दैट इज हियर 4 4 एंड 5 30. One more practices which is you can say here that is covered. Sorry, this is section 3 clause 3, that is 4 RTP. Section 3 clause 4, that is 5 RTP, and section 4 talks about 5 again 5. Now these are the 14 RTP. So now if we compare on this point, section 36A. Section 36 talks about UTP and section 33 deals with 14 RTP, which is now segregated or you can say जिनको अलग कर दिया गया है। कुछ practices को section 3 clause 3 के अंदर कवर किया गया है, some practices are covered under section 3 clause 4
some practices are covered under section 4. Again here it is very important to understand that the burden of proof under section 3 clause 3 is different when we compare the burden of proof under section 3 clause 4. Broadly आप ऐसे समझ सकते that is section 3 clause 3 की जब बात करेंगे और section 3 clause 4 की बात करेंगे तो burden of proof यहाँ पर और burden of proof यहाँ पर किस पर है? तो यहाँ पर जो burden of proof है section 3 clause 3 you know very well that is relating to the horizontal agreement and shall presume is there and or you can say that is rule of per se is taken on section 3 clause 3. तो यहाँ पर जनरली प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर मैटर कार्टल्स वगैरह से कनेक्टेड है तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा? अपोजिट पार्टी. सेक्शन 3 क्लॉज 4 का अगर मैटर है तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर किस पर जाएगा? द पर्सन हु इज मेकिंग द कंप्लेंट मींस द कंप्लेनेंट. यहाँ पर अप्रोच आपकी रूल ऑफ रीजन का जाएगा बट यहाँ पर आपका रूल ऑफ पर से. यहाँ पर जो कमीशन है शैल प्रिज्यूम बट यहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ेगा. बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? अब कंप्लेनेंट के ऊपर. तो ये जो कैटेगरीज है यहाँ पर सेक्शन 3 जो 4 आरटीपीज कवर किए हैं, सेक्शन 3 क्लोज 4 के अंदर 5, सेक्शन 4 के अंदर अगेन 5 आरटीपीज, इनको डिवाइड कर दिए हैं एग्रीगेट हमारे पास ना अगेन 40. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डीजी जो डायरेक्टर जनरल है वो आपका इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रेशन की 2 पावर थी पहले, अभी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड. इस पर भी अभी करंट जो बिल आया है 2022 उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, इनकी पावर को थोड़ा बढ़ाया गया है. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी इज नाउ in as per the bill is done by the commission with prior approval of the central government. So this is also a change as per the recent amendment 2022 bill. Section 35 compulsory registration की बात करते हैं but आज की डेट में registration is not required. Next point is that is separate concept of RTP and MTP. जब आप MRTP पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट अलग अलग दिखाई देते हैं बट nowadays in competition act 2002 you generally refer that is AAEC. That is very beautiful phrase added by the lawmakers, that is appreciable adverse effect on competition in India. Appreciable means जो बड़े लेवल पर which can influence your economy. Adverse जो नेगेटिव इफेक्ट पैदा करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन कंपटीशन इन इंडिया. तो यहां पर जनरली जो डेफिनेशन थी, जो लिस्ट थी आरटीपी और एमटीपी की, जो प्रोवाइडेड लिस्ट थी एमआरटीपी के अंदर, उन पॉइंट्स को तो कवर किया ही किया है बट यहां पर जो इसका जो डेफिनेशन यू कैन से और यू कैन से द एरिया उसको काफी ब्रॉड कर दिया गया है. And now ultimately it is decided, obviously at initial stage the commission generally refer the list or you can say the sections, like if the matter is relating to section 3, so commission generally refer 19 clause 3, 19 clause 4, वो लिस्ट वहां पर प्रोवाइड किए गए, फैक्टर्स प्रोवाइड किए जिनको रेफर करेगा कमीशन. बट इन एडिशन टू दिस if it may be possible it may be possible that some point is which is not covered under that particular list, then at that point of time commission may check the appreciable adverse effect. जब हम लॉ को रेफर करेंगे तो उस पर डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि हाँ it will create appreciable adverse effect, but there may be some areas where the law is silent. At that point of time, the commission is to analyze the facts, circumstances, and then the commission will decide. The same problem you can find with the recent changes. Recent change, the bill which talks about the threshold limit, that is 2000 crore. Or you can say that is if the matter is relating to merger or combination, तो उस जो merger और combination जो अभी होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? आपका ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर.
And if the merger combination, if the if the transactions are relating to data, if the transactions are relating to online platform, digital market like cryptocurrency, AI, etc. तो वहां पर भी you can say that is जो commission है will take the help of all such relevant you can say the factors, and then it will decide the appreciable adversity. तो इसका जो जो broadness है, जो जो meaning का जो यहाँ पर एक interpretation लिया गया है, that is very very broad as compared to MRTP Act. Point number 10 talks about that only RTP clause shall void not whole agreement. अगर कोई एग्रीमेंट है और उसमें कोई एक क्लॉज है तो जो कि आपका ठीक नहीं है एज पर द लॉ, तो उस क्लॉज को वो क्या कर देंगे, वाइड, ओनली दैट क्लॉज, नॉट द एंटायर एग्रीमेंट. बट यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट दैट इज द होल एग्रीमेंट शैल बी वाइड, सेक्शन 3 क्लॉज 2 यू कैन. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नो रेगुलेशन ऑन कॉम्बिनेशन मर्जर के पॉइंट, आपको जो प्रोविजंस है वो एमआरटीपी एक्ट में नहीं प्रोवाइड किए गए हैं. बट राइट नाउ वी हैव थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, सेक्शन 5 you can read with section 6 where you will get to know that if the combination mergers are hit by the threshold criteria, then it is mandatory condition, mandatory duty of the competitors to inform or to communicate the commission, otherwise the heavy penalty shall be imposed. Again I am connecting this point with the recent the bill. वहां पर जो ट्रस्ट फैक्टर की जो बात किया गया है, इट इज प्रोवाइडेड दैट कि जो भी कमीशन होगा, जो भी कॉम्बिनेशन मर्जर आप कर रहे हैं वहां पर, तो हम प्रिज्यूम क्या करेंगे कि इट इज फाइन इफ यू हैव कम्युनिकेटेड, देन इट मींस इट इज hitting the threshold criteria, and we trust on you that if you did not communicate, तो आपका वहां पर threshold criteria को वो हिट नहीं करता. बट if it is found at later stage that your combination was hitting the threshold criteria but you did not communicate, you did not inform commission, you did not take prior approval of commission, then heavy penalty shall be imposed. That is the change which is recently introduced. Primarily, obviously, trust factors should be there. The trust should be promoted. बट इट डजंट मीन दैट कि उस ट्रस्ट का आप मिसयूज करें. अगर आपका थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया से हिट करते हैं कॉम्बिनेशन वगैरह, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा. इट इज मैंडेटरी ड्यूटी. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नो एप्रिशिएबल एडवर्सिटी. ये जो फ्रेज आपका एमआरटीपी एक्ट में आपको नहीं दिखाई देते हैं, बट व्हेन वी रेफर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 यू कैन रियली अप्रिशिएट द फ्रेज दैट इज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट on competition in India. अब ये in India means that is obviously जो extra territorial jurisdiction है उसको भी आप यहाँ पर माइंड में रखें कि जो एग्रीमेंट, अगर सपोज कीजिए इन इंडिया के ऊपर जो हमने बात किया कि इन इंडिया में अगर एग्रीमेंट इंडिया में है तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हम इंडिया पे चेक करेंगे, ठीक है ना. अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है बाहर आउट ऑफ इंडिया और उसका जो इम्पैक्ट वो इंडिया पे है, तो वहां पर भी सीसीआई का जुरिडिक्शन है. Section 32. This talks about the extraterritorial jurisdiction. You should refer. In addition to this, predatory price not defined properly. Now predatory price के दो की पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं. लिमिटेड पावर, एमआरटीपी कमीशन का लिमिटेड पावर था, यहाँ पर जो सीसीआई का पावर है वो बहुत ब्रॉड दे रखा है विद पिनल पावर, जो कि रिसेंट बिल के अंदर बताया गया है. नॉट इफेक्टिव एनफोर्समेंट फंक्शंस इतने इफेक्टिव नहीं थे, बट आज की डेट में हमारे काफी इफेक्टिव है. बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव ऑन सर्टेन पॉइंट्स लाइक लीनियंसी प्रोग्राम की जब हम बात करेंगे, और लीनियंसी जो प्रोग्राम है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं रिसेंट बिल के. I have covered all such point in the previous lecture related to the Competition Amendment Bill 2022. नो कंसेप्ट ऑफ एडवोकेसी. एमआरटीपी में एडवोकेसी कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पर आपका
दे रखा है। एक्स पोस्ट रोल सेक्शन 3(4) के रेफरेंस में ex post regulations relate to regulations after the event has started or you can say occurred, and ex ante role is relating to or refer to the regulation before the occurrence of the event. Before the occurrence of event is duty of commission to take proper care. CCI also perform advisory role as per the Competition Act 2002. Next one is that is, if you talk about the next point, MRTP law is applied only to the private enterprises, not government enterprises. But right now, Competition Act law is applied to government and private enterprises both. In MRTP, the concept of agreement was narrow. Now it is inclusive manner और very broad. जब एग्रीमेंट में आप जो रिसेंट का जो बिल है 2022 उसमें भी जब रेफर करेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीमेंट में वहां पर चेंजेस किए गए है ना। नेक्स्ट इज दैट इज डील वैल्यू थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया नॉट फाउंड इन एमआरटीपी deal value threshold criteria, but deal value threshold criteria right now is in competition and और इसके अंदर भी चेंजेस की बात की है जो 2000 करोड़ की मैंने अभी बात की एज पर करंट बिल। नो लीनियंसी प्रोग्राम वहां पर नहीं था हमारा, आज की डेट में हमारे पास है, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव इन दिस लॉ ऑल्सो। नो पावर टू इम्पोज पेनल्टी क्योंकि यहाँ पर सीज और डाइजेस्ट ऑर्डर आपके पास किए जाते थे बाय द कमीशन, बट राइट नाउ जो पावर है काफी ब्रॉड है, इम्पोज हैवी पेनल्टी, ठीक है ना, और कुछ पिनल प्रोविजंस भी ऐड करने की बात की गई है किसके थ्रू, जो आपका जो रिसेंट अमेंडमेंट बिल है 2022, तो पावर काफी ब्रॉड कर दिया। नो प्रोविजन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू सीक ओपिनियन, बट राइट नाउ the provisions to statutory authority to seek opinion is provided. In MRTP, rule of law approach is followed, but यहाँ पर rule of reason generally is preferred. It is MRTP is based on command and control regime, but Competition Act is based on liberalized regime. Reason behind, again preamble you can refer, that is promote and sustain competition. जितना लिबरल फॉर्म में आप रहेंगे, जितना अगर रिजिडिटी की फॉर्म में रहेंगे तो वहां पर आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगा, बट लिबरलाइज्ड फॉर्म में अगर रहेंगे तो वहां पर नो डाउट कंपटीशन विल बी प्रमोटेड एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर एंड द इकोनॉमी। नो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एज पर MRTP, or you can say right now as we have already discussed, that is extraterritorial jurisdiction की यहाँ पर बात किया गया है। In addition to all these differences, you can also refer the preamble of the MRTP or preamble of the competition, तो वहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। You can also refer the recent amendment bill, जो changes प्रोवाइड किए गए, जो आपका जो competition amendment जो बिल है 2022 उसको आप कंपेयर कर सकते हैं एंड द पॉइंट्स यू कैन रेफर एज ए डिफरेंस। अगेन अगर उससे भी ज्यादा अगर आप डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द क्रिप्टोकरेंसी, डाटा प्रोटेक्शन, artificial intelligence on which MRTP law was signed. So I hope this lecture is creating some values and will help you a lot in your exam. LLM के स्टूडेंट्स को पता है कि उनके एग्जाम में ये अराउंड 10 मार्क्स का कवर होता है. So if you have any doubt, you can ask me. You can drop a comment, write a comment, and if you like this lecture, I request you all kindly like, comment, share, and subscribe this channel. And in next lecture, I'll try to give some recent
topic also, so that you can add some additional value in your knowledge. So thank you very much. Have a nice day. Stay blessed.